So we'll start with you, sir. Reactions have been through the roof. गाना जो है, it's already become so popular. आज ट्रेलर का टाइम है. आज पहली बार सुनने को मिलेगा आपके इस कैरेक्टर के बारे में. How's the reaction been till now? जिनसे भी आपकी बात हुई है about the teaser and the song. Hi. Can we turn up the mic, please? So, the strange thing is that, whenever I see, the trailer or the song, and I see Om Puri, Om Ji in this, it just kills me. Because, I've done a lot of work with Om Ji since, years and years. And one moment he was there, and the second one he was gone. So it just, I don't actually enjoy watching the teaser or the song. Yeah, I think like any relationship, there's an evolution. And the more you work, the more time you spend together, you begin to... Sorry, you're describing a marriage. He's talking about mini, not mini. No, but you... I'm micro mini. You begin to sort of understand each other's sensibilities. You begin to understand each other's politics, about issues, and that's what's been great. I think a lot of people have told me that I've done 3 films with Salman, and are you only doing this because he's a superstar? But I think I'm really, really fortunate that I've got, of course, the greatest superstar in the country, but I've also managed to do 3 very different films. I managed to get subjects that both of us were equally excited about. And that's the only reason the films came together, because the moment the 2 of us heard that story or decided that this is what we want to do, we were equally excited and passionate about it. From what I've read, you wrote this film especially for him, but it's not the exact Salman Khan film that we associate him with. Your films have always been different when it started. This film, the seed of the idea came from a film called The Little Boy, which I'd seen, and there was something about that idea, the germ of the idea, that got stuck in my head, and we got in touch with the filmmakers and said, can we take the idea and adapt it to our context? And then once... And one visual of that black label coach. Yeah. There was an ad which sort of we put the 2 together and said there was an ad about 2 brothers, and I said, this is an idea that I'd like to develop. And when I bounced it off Salman, he thought it was a beautiful character, it was a nice story, and that's how it began. Then I started developing the screenplay. Sohail, to be real life brothers... For me, you don't have to ask anything, it's a no-brainer. I have Salman Khan, I've got Kabir Khan, so it's a no-brainer. No, I have to ask you this, when the cameras come on, you real life brothers, but when the cameras come on to play those real life brothers, has anything changed? मतलब वो जो भाई का रोल आप प्ले कर रहे हैं on screen, जब shoot हो रहा होता है, does anything change from your real life chemistry?
No, nothing. In fact, when people ask me this, I think it comes easier. We just bring our real life chemistry into real life. And that was very important for me because, you know, the thing is that otherwise, if it was another actor, you have to build in the screenplay a lot of scenes to show the love between two brothers. Somehow when you see Sohail and Salman together, it's like one shot and you know, okay, let's proceed from here. You don't need to build it anymore. It's like a really emotional film, okay? There's no hard work in this film like in Sultan or in Tiger, running or jumping off, you know, Kushti, Utha, Patak, all that stuff. But emotionally this one was really draining because Sohail and me, you know, our brothers, you know, we're playing brothers here. So every time there's something, you know, in the screenplay, you know, twist and turns, jahan pe emotional hota tha, it used to really mess me up. Now, if it was somebody else, me being a very limited performer, I would have had a huge problem. You know, it would look fake, false. So the best thing, yeah, everyone knows that. So, I don't think after this film you will say that. This is like really. No, they will say it. They will say it. They will say it. And I'm happy that they say it. I would like the rewards. I don't like the awards. Award function में perform करने के बाद I like that. Award के लिए मत बनाओ. So it became really easy for me, acting-wise, because I was not actually acting, but emotionally it was really draining. Even when I was dubbing, it's embarrassing that a grown man, you know, standing there, and you know it's a movie, and you're dubbing there. I mean, chalo, you're acting, your brother's not there. You know, you have this thing that gone to war, whether he's going to come back, not come back, emotion. But when you're dubbing, so you know, not you're just, you know, just lip syncing and dubbing that thing, you know, tears coming out. That was really bad. Okay, so I think now, And coming from us, it's really bad. So there was a time where my dad and my mom and Beju Chacha, they came to see me in jail. So my uncle saw me after a very long time. He says, how's it going? This is good, nice one-bedroom suite, you know, it's cool. So my dad smiled. My uncle started crying. So my dad said, yaar, tum kaise padha ho? Jao yaar, bahar jao yaar. okay, so for the next bit, I would request all of you to now turn off your cameras because now we're going to launch the trailer. So, आपको अपने cameras जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे, ठीक है? Yeah, but really we'd like. क्योंकि वो रात को 9 बजे वैसे आएगा, लेकिन We can't. Maybe we're going to give it to you, but you know, if you record it and then release it, it won't look nice. There's a lot of work that's gone into it, so please, if you could switch off your you could switch off your cameras. हमारा press बड़ा ही आज्ञाकारी press है. वो आपकी बात हमेशा सुनेंगे. Request करो. Request, तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप अपना कैमरा जो है वो अब switch off कर दें. विभा ने सुन लिया. Please. Please. भारती. Just for the trailer. We'll be giving it in 3 hours anyway to you. Thank you. We'll 3 घंटे का. बंद हुए हैं. Okay. For you, and इसमें भी she's a producer. You showed her the trailer. What was her first reaction जब film बन गई? क्या बोला उन्होंने कि? I think Amar showed her the trailer yesterday. उन्होंने भी पहली बार कल ही देखा? Yeah, so she saw it yesterday. Actually, the whole family saw it yesterday in the afternoon, and it was remarkable because she said something really sweet. She said, "I pray a lot before Salman's films come, but now because this one has Sohail as well, the prayers are going to be, you know, twice as much."
She has to for me. She's got no reason to pay for it. She has to pay for me. He doesn't need the press. I need the press. But it's been such a long time that you both have been together. You mad? I needed more than all you guys put together. आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई. Sohail, but such a long time that you both shared screen space together in a film. जो पहले की यादें हैं and जो अब इस बार जो memories create हुई हैं, he's changed our so last much. film together was Got to See Greater. So whatever we do after that would have been magical, and fortunately we got Tubelight to do. So it's wonderful having shared the screen with her. No, we've given some great films together. मैंने प्यार क्यों किया? मैंने प्यार क्यों किया? कौन बोला वो? वीर. अच्छा. Hello, brother. That was Arbaz. Sorry. Yeah, but that was, as we always say, that Hello Brother was one of the most expensive home videos anyone can make. Kabir, I have to ask you this question. From the time the first song debuted, Pritam da ye bhi, every song has one signature step जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं उसमें नाचते हैं and they copy that. Conscious decision or it just happens? ये एक signature step होता है. Yeah, see, obviously there's something called the hook step that everybody does try and get in their songs. But with Salman, there's always been an attempt that, Salman also believes that it should be a step that a child can dance to and can copy, because that's when they can truly enjoy that song. So it is, and also in this, the character is simple. Jassi is definitely not going to do any great moves. He will do simple moves. So I think in a certain sense, it comes organically into the film. So you're an award-winning choreographer now. Did you choreograph this step also? Rubbish is that. वो वैभवी यार. But did you come up with this step, the hook step? It was it was by mistake. That what is that thing? वो जग्गू मियाँ. It was by mistake. That's hero. Of course. ये step किसने किया? ये जो main step है the radio. Remo ने दिखाया कुछ और हुआ कुछ और, and I thought that I'm doing exactly like what how Remo was showing me. So आप हंसो मत, बाकी गाने अभी तक देने आपको. पिक्चर रिलीज हो रही है, 3 गाने अभी तक आए नहीं. प्रीतम दा, your turn now. अब आपकी बारी है. गानों के बारे में हम बात कर रहे थे. दादा एक दिन बात कर रहे थे फोन पे. Yes, please, we need to. ये कहानी पता है. So दादा एक दिन फोन पे बात कर रहे हैं. अब किसी से बात कर रहे होंगे तो उन्होंने एक मकड़ी देखी और कैटरपिलर देखा. तो दादा being this musical person, very soft, tender, उन्होंने वो कैटरपिलर को ऐसा लिया और बात करते करते उन्होंने और फेंक दिया कहीं से. ये फेंकना था और उन्होंने फोन फेंक दिया. दादा, people know the story, ना, जब आप साइकिल भूल गए थे फिर गाड़ी भूल गए थे. गाड़ी भूल गए थे वहाँ. जाके कंप्लेन कर दिया पुलिस स्टेशन कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई. नई गाड़ी आई, अब भी ली, चोरी हो गई. स्टूडियो चले गए, वहाँ से रिक्शा में आ गए वापस. Okay, one last question, but is it the toughest to compose for him because his songs, the larger than life personality, इनके गाने में भी वो झलकना चाहिए. Is it the toughest to make a song Salman Khan? No, actually not. Obviously, एक तो सिक्योरिटी रहता है कि कुछ भी गाना बनाओ, आफ्टर ही एक्ट्स इन इट विल बी हिट. सो उसका कोई है ना. बट ये मूवी बहुत बिकॉज द कैरेक्टर्स आर लाइक दैट, इट्स बेस्ड इन द 60s. सो वो सब रेस्ट्रिक्शन रहता है विद दैट. तो वो सब माइंड में रख के गाना बनाने में ऑब्वियसली थोड़ा सा इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन पुट एनी आइटम सॉन्ग और एनीथिंग. Like you have to keep every character in mind, the situation in mind. वो हल्का सा restriction तो रहता है, but उसमें मजा आता है ना. तो नॉर्मल गाना बहुत बना है. मेरे हो गए, अब आपकी बारी है, तो अपने तीर जो हैं आप जरा कमानों से निकालें. आलोक पूछना चाहता है सबसे पहले. मेरा सवाल आपसे है कि 60s में बेस्ड है फिल्म और नाम भी आपका लक्ष्मण है, सोहेल का भरत है.
तो खुद की क्या तैयारियां थी कि 60 के दशक में अगर आप लक्ष्मण के किरदार में जाएंगे तो अपने लेवल पे आपने किस तरीके से? बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं। अमर सर सच में कोई तैयारी नहीं थी अपने? हाँ वो कुछ स्वेटर, शर्ट, ढीली पैंट और जूते पता नहीं कहाँ से मंगवाए कबीर साहब ने। यही तैयारी थी, जैसे कपड़े पहन लिए वैसे कैरेक्टर में घुस गए। नहीं, एक डिस्कशन होता है पूरे कैरेक्टर के बारे में, एक स्क्रिप्ट के बारे में। ऑब्वियसली इट्स अ होल प्रोसेस दैट वन गोस थ्रू। एंड ये गाने जिस तरीके से गाना पिकअप कर रहा है रेडियो सॉन्ग, उसके बारे में थोड़ा बताएं क्योंकि हर तरफ सजन रेडियो अब आलोक ही बोल रहा है उधर से। तो हाँ, तो ये तो गाना तो पिकअप होने ही वाला था क्योंकि रेडियो है, रेडियो पे बजेगा रेडियो का गाना, तो जितने भी रेडियो वाले रेडियो का गाना तो रेडियो पे बजाएंगे हाँ, क्योंकि उनको फ्री फ्रंट की पब्लिसिटी मिल गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान जी, आपने अभी ये ओमपुरी जी के बारे में बताया था, ओमपुरी जी के, कि आपने उनको बहुत मिस किया। अन्नूपुरी नहीं नाम है, ओमपुरी। वो अन्नू मलिक है। अन्नू ही निकला था, बाद में साइड में पूछ लिया मैंने ओमपुरी। तो मुझे पूछना था कि रीमा लागू जी भी आपकी स्क्रीन मदर है। जी। उनके लिए So I've just lost, we just lost VK sir as well, which is, he was very close to us and amazing person. I mean, he was our hero. And then अभी मैं लीवा में शूट कर रहा था तो सभी को पता चला कि रीमा जी भी नहीं। तो it's really sad that I've lost, three very close people almost, in the last कुछ 3-4 महीने। और मुझे एक सवाल पूछना था कि आपका जो भोलापन है रियल लाइफ में, वो पिछली 2 फिल्मों से नजर आ रहा है। वो ढोंग है। तभी ये ट्यूबलाइट में भी आप भोले भाले नजर आ रहे हो, बजरंगी भाईजान में भी थे, तो क्या ये आपका आगे? ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, हाँ। अब सोच रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा सा बन जाऊँ। थैंक यू। सलमान यहाँ राइट साइड में, सलमान सॉरी लेफ्ट में, सलमान, कबीर, सोहेल, सबको मेरा नमस्ते। रेखा खान, नवभारत टाइम से। तीनों के लिए है मेरा ये सवाल, क्योंकि मुझे लगता है आप तीनों के लिए ये फिल्म बहुत ख़ास होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये ईद पर है। सलमान, एक तरफ आप अपने डायरेक्टर भाई के साथ में एक्टर के तौर पे आ रहे हैं, कबीर के साथ में ये आपकी तीसरी फिल्म है। कबीर, आपके लिए सलमान के साथ में ये तीसरी एसोसिएशन है, तो मैं तीनों से जानना चाहती हूँ कि किस तरह से ये फिल्म आप लोग के लिए खास है, और स्पेशली ईद पर, ईद रिलीज है ये फिल्म। मेरी तो सारी सलमान के साथ जो फिल्में हुई ईद पे ही आई हैं, टाइम लगेगी, सो दैट्स बिकम लाइक पार्ट ऑफ द फेस्टिविटीज। बट हर फिल्म स्पेशल होती है। आई थिंक जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जब आप कहानी से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हर फिल्म स्पेशल बन जाती है। आई थिंक आई एम एज एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एज आई वाज अबाउट बजरंगी भाईजान। सलमान, आप बताएं प्लीज। If you're not interested in something, तो बनाओ क्यों? अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो फिर there's no point making it। तो वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही वो पिक्चर रुक जाती है कि किसी ने आके एक बहुत ही ख़राब स्क्रिप्ट बनाई, सुनाई हमें, तो क्यों करेंगे? जब तक कि वो आपको फैसिनेट नहीं करती, जब तक कि वो स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा लगे कि भाई हर चीज़ छोड़ के इसी फिल्म को स्टार्ट करना चाहिए, जब तक आई डोंट थिंक एनीवन डज अ मूवी एनीमोर। सलमान जवाब नहीं दिया, तो प्लीज आप भी कुछ कहिए, आपसे भी था मेरा सवाल। No, for me this journey has been wonderful, and I've always been a Kabir Khan fan. Actually, I think जब मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की वो कबीर खान से बहुत पहले थी, लेकिन I've been following his films from New York to Tiger to बजरंगी भाईजान, now Tubelight। इनमें एक खासियत है क्या, ही क्रिएट्स अ वर्ल्ड, वो एक दुनिया क्रिएट करते हैं। जब मैं उनकी फिल्में देखता था तो एज अ टेक्नीशियन, इनफैक्ट I didn't think that I would have the opportunity to be on the same set as Kabir, because I can't be an assistant anymore, but I got this opportunity to be as an actor,
So for me, doing this film was actually a learning process where he handles the production, and he does everything with a lot of ease. So for me, this film has been very special. It's been a learning process. The kind of cinema that I got to be a part of, practically, as an actor, as a technician, I've got a lot, this Eid inshallah, the film that is releasing, I've got a lot to learn from that film. So I'm very grateful for the team that I'm a part of this film, and I hope that this team stays together and works together. They're a beautiful team, from Amar to Salman Productions to Kabir Productions, and they make some great. We might do a sequel to this, LED. Salman, here, on towards your right. Here, Deepika, how are you? सलमान, ये आर्मी बैकग्राउंड पे उठाई गई है इस कहानी, तो क्यों, और कुमाऊं रेजिमेंट ही क्यों? एंड वी कैन सी पिछली फिल्मों से मैं ये नोट कर, बहुत बाद में आए हैं, ये जवाब दे। अच्छा, लेकिन आपके जो पैट्रियटिज्म है, वी कैन सी योर पैट्रियटिज्म, यू नो, what does patriotism mean to you? Basically, this is a story about, you know, two brothers based at that point in time, जब के वो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, कि एक भाई जाता है वॉर के लिए, दूसरा भाई मिन्नतें मांगता है कि ये वॉर खत्म हो जाए ताकि वहाँ के सोल्जर्स वापस चले जाएं, हमारे सोल्जर्स वापस से आ जाए। तो ये है, और उसका यकीन कैसे अपने भाई को लेके आता है या नहीं लेके आता है, वो आप देखिएगा पिक्चर में। जहाँ तक मुझे याद है 62 की जो वॉर हुई थी, चाइना वॉर, तो जैसे अपनी इंडियन आर्मी पहुंची थी तो सीज फायर हो गया था। मुझे याद नहीं है, सीज फायर हो गया था। नहीं, कभी सीज फायर हो गया था, 1 महीने बाद हुआ था 62 में। सीज फायर 1 महीने बाद हुआ था। So it's set in 62, and the reason why it's set in Kumaon is because the Kumaon regiment was one of the most active regiments in both the fronts of the war, the east and the west, and that's why Sohail's character is a soldier. My father had gone for the war. Sorry? My father had gone for the war. At the time of ceasefire? Ceasefire. And he came back. Ceasefire पहुँचते से So I think late पहुँचे होंगे, क्योंकि 1 महीने बाद ceasefire हुआ था। नहीं, जैसे उनकी रेजिमेंट गई थी तो ceasefire। आपको ये पढ़ाई क्लियरली याद होगा, क्योंकि उस वक्त आप होगी 25-26 साल की। नहीं, मैं 70 साल की थोड़ी हूँ। Shilpa, you have a question? Hi, Salman. A role like this must be difficult to play in the part that you have to convey it with a lot of empathy and sensitivity, and it can be very easy to go over the top. So how did you find that right balance? क्या ये नई बच्ची पढ़ लिख के आई है? See, sweetheart, when you sign a film, so it's all in the screenplay, it's all in the story. So when if you can visualize that character, if you can walk the character, you will be able to do the character perfectly well. So out here, it's not only walking, it's also the way he talks is very different. You know, he's pure. So to do a pure character is like the most difficult thing, you know, there is, because, you know, in our lives, we're not like the most purest of people. So to portray someone like, maybe like a character from Hum Aapke Hain Kaun, or portray someone from Bajrangi Bhaijaan, or Tubelight, is the most difficult thing, because suddenly the hero of, you know, that man's ego, कि मैं ऐसा perform करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं, you know, put an action sequence here, and suddenly, you know, I will dance like a proper step. So that becomes a big challenge in a film like this. To maintain that simplicity, the honesty, and the purity of the character is like the most difficult thing that one has to do in this, in a film like this, because everyone, you know, tends to get greedy. You know, everyone wants to, you know, prove themselves. So out here, the simpler it is, the better, and it is your own personality that goes against you in films like this. Just getting better and better. Kabir. Iru for P24. मेरा सवाल आपसे। Where are you?
जनरली जो जिस तरह का इंसिडेंस फिल्म में दिखाया गया है, चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया गया कि एक ब्रदर मिसिंग है और एक भाई उसको ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंस ये हमने नहीं बोला, ये आपका इन्फ्लुएंस नहीं, जो भी हम ट्रेलर में देख रहे हैं, ट्रेलर से जितना समझ में आ रहा है, तो इस तरह के इंसिडेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान LOC पे बहुत होते रहते हैं कि फैमिलीज जो वहाँ रहते हैं उनके मेंबर्स कोई ना कोई पाकिस्तान की साइड में या पाकिस्तानी इंडियन साइड पे मिस हो जाते हैं और ऑब्वियसली लोग उनको बहुत ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन आपने कहानी वहाँ सेट ना करके आप इसको बैकवर्ड लेके गए, 62 चाइना वॉर के अगेंस्ट आपने सेट किया। क्या ये एक वजह है कि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी भाईजान वापस से रिलीज कर देते नॉट लाइक दैट, मतलब कि क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के साथ जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमेशा तलखी हो जाती है, तो इसीलिए आपने इसको सोचा कि ये चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया जाए। हमने बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान के बारे में बात करी थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। रीजन वो नहीं है, आई थिंक एवरी स्टोरी हैज अ डिफरेंट रीजन व्हाई इट्स सेट इन अ सर्टेन लोकेशन और सेपरेट टाइम। तो जब आप फिल्म देखेंगी देन यू विल रियलाइज कि कुछ और एलिमेंट्स हैं इस कहानी में जिसकी वजह से हमने इसको 1962 में सेट किया है। और आई लाइक टू से दैट 62 में सेट है, लेकिन जो इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस आई पिक्ड दिस स्टोरी इज बिकॉज इट्स अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी टुडे अबाउट द इश्यूज दैट इट ब्रिंग्स अप। ऑब्वियसली ट्रेलर में हम सब कुछ नहीं आपको बता सकते, जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या रेलेवेंस है आज। हाय सलमान, कांग्रेचुलेशंस टू यू। एक मिनट कबीर से कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने जैकी चैन को वेलकम किया और जिस तरह से उन लोगों ने दंगल को इतना ऊपर लेके गए, क्या आपकी फिल्म भी इसी कड़ी में आगे बढ़ेगी कि उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो भावनात्मक रिश्ते लोगों के दरमियान फिल्मों के द्वारा बढ़े, इसमें आपकी फिल्म भी एक अच्छी कड़ी बनेगी या फिर? जी कोशिश तो रहेगी, लेकिन चाइना का अलग एक सिस्टम है। चाइना का एक कोटा सिस्टम है जिसमें वो साल में सिर्फ 32 फिल्में रिलीज करते हैं जो बाहर से आती हैं। अब उसके लिए आपको अपनी फिल्म सबमिट करनी पड़ती है, वो उसको देखते हैं, अगर उनको लगा कि ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है, उनके सेंसर उनको उसको पास कर देते हैं, तब फिर जाके आप रिलीज का प्लान करते हैं। तो कोशिश रहेगी, हम चाहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें एक चाइना कनेक्शन है कि वहाँ भी लोग देखें, लेकिन वहाँ रिलीज होगी या नहीं होगी ये हम सिर्फ बाद में बता पाएंगे जब वो पिक्चर देख लेंगे। Hi Salman, on your left, you're Sohail here. Congratulations to you and the entire team. यहाँ पर कभी लाइफ में किसी को आपने ट्यूबलाइट कहा या आपको किसी ने ट्यूबलाइट कहा है, कभी ऐसा कोई मौका हो, और कोई ऐसी बात जहाँ पर थिंग्स आर इम्पॉसिबल बट आपको बहुत यकीन हो, कोई चीज़ ऐसी घटी हो और थिंग्स हैव हैपेंड एक्चुअली? यकीन पे ही दुनिया कायम है भाई। और ट्यूबलाइट अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया, शायद इसके बाद बुलाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद चाइना जी। सो चाइना कनेक्शन क्या है, वो मतलब आप अगर फिल्म देखें तो बेहतर रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ उसका बैकड्रॉप जो है फिल्म का वो 1962 वॉर है, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारा, वो बैकड्रॉप है। और उसकी वजह से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुई थी हमारे मुल्क में जो एक्चुअली हम लोग जानते नहीं हैं, और वो भी मैंने डिस्कवर किया था जब मैं ये फिल्म का आइडिया मेरे दिमाग में था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे फिल्म। Kabir, this film we have been reading a lot of this film, hearing a lot about this film. At one level, we also heard it's an Indo-Chinese love story. Nothing was shown of the Chinese actress Zuzu, who's there in the film. Yeah, sorry. So it's written as Zuzu, but she pronounces it as Juju. Yeah, whatever. I mean, she's not been shown. So what is that a deliberate reason, or we are talking about two brothers now? And the war and everything. See, a film obviously has many more aspects to it than what is displayed in a trailer. So there are many more sort of sub stories and subplots in the film. There are many more characters. So सब कुछ नहीं दिखाते हैं ट्रेलर में, थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं। Love story जैसे initially it was said to be an Indo-Chinese love story. अब वो है या नहीं है वो आपको फिल्म देख के you'll have to discover it for yourself. मिस्टर अमर, मेरा सवाल आपसे है कि आप को-प्रोड्यूसर भी हैं, वो लोग एक सेकंड किस तरह को-प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, तो आपका क्या यकीन है इस फिल्म के साथ, क्योंकि रिलीज के पहले अभी लगभग 1 महीने का वक्त बचा हुआ है? Very difficult question. यकीन सिर्फ ये है कि कबीर has made a really good film. We've tried to be, we've really tried to make the film correctly. Whether it's the production part of it, whether it's distributing the film now. We've picked some right appropriate partners. We're trying to make this film, give this film the kind of pedestal that it needs.
But yeah, the starting point is that Kabir has made a really, really good film, and बस यही है कि the audience will love the film. सलमान, मेरा सवाल आपसे है, सलमा जी जुड़ी हैं इस फिल्म से, तो उनको आपने मनाया कि आप Such a waste of the last question. We'll take one more after this. I have one last question, sir. So we're taking one last question. One last question. It is. किस तरफ? We're here because of our parents. अगर माँ का नाम, बेटे के नाम से पहला नहीं आए, तो फायदा क्या? One question. Okay. Oh, आपकी आवाज. Yes, we take one question from there. बाहुबली के पहले वाले के बाद हम आए बजरंगी, हाँ, और फिर दूसरी वाले के बाद ये ट्यूबलाइट. तो हमारे CEO साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है. उनको इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है. It's a phenomenal success. Bahubali was amazing. I haven't seen the film yet. I'm going to see the film, but this doesn't matter. Doesn't matter. हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है. अब इस फिल्म की ये तकदीर है. इस फिल्म की तकदीर देखेंगे कि कितनी बड़ी कितनी. No, but it's lovely. No, but it's lovely when a film comes and breaks that records. It just gives a new yardstick. It's so when I mean it's so lovely that Bahubali has come and done something like this. Yeah. सलमान तकदीर कबीर, आपने हिंदी सिनेमा में जो नैरेटिव है वो बदलने की कोशिश की है. लड़का लड़की की प्रेम कहानी से आप पॉलिटिक्स लेकर आए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेकर आए. 4 साल में एक पिक्चर बनाते हैं. लोगों को मैं हर साल में 2 रिलीज करता हूँ. देखने वो एवरेज उतना ही आ जाता है. Okay, well, thank you so much. We are now closing the Q&A session. Thank you, ladies and gentlemen. But I'm sure. Yes. ये उठे आप.